जैसा कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड बहुत गंदा हो चुका है, तो अब हम इस टूल की मदद से इस कीबोर्ड को साफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रश से डर्ट क्लीन करनी है इसके ऊपर से। बस आप हाथ घुसाएंगे कीबोर्ड नहीं दिखेगा। क्लीन तो होता है भाई। This is the result after cleaning with dirt. The result after cleaning with brushes. Now we are going to pour some alcohol on this microfiber cloth to clean the keyboard. So this is the result after cleaning with microfiber cloth and isopropyl alcohol. Here we have all the equipment to clean the motherboard: isopropyl alcohol, microfiber cloth, tweezer, and anti-static brushes. So let's start cleaning the motherboard.